In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor M.Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor M.Masood. आज की इस वीडियो में हम साउंड जो पढ़ेंगे दैट इज खे, चाहे सी खे की आवाज़ दे या खे लेटर इटसेल्फ इसको हम स्टडी करें, या इवन क्यू अगर वो भी लफ्ज़ के शुरू में आएगा द साउंड विल बी द सेम। और खे की सही आवाज़ निकालने के लिए अपनी ज़ुबान का पिछला हिस्सा ऊपर तालू के साथ लगाएं ताकि हवा का दबाव रुक जाए। जिस तरह फी और ठी में जूं ही आवाज़ तेज़ी से बाहर निकलती है तो वॉइसलेस आवाज़ पैदा होती है, इसी तरह खे की आवाज़ भी वॉइसलेस है, यानी खे इज़ अ वॉइसलेस लेटर। इसकी भी हम उसी तरह मशक करेंगे जैसे इससे पहले हम फी और ठी की कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपने इससे पहले ख़ास तौर पर जो वॉइस लेटर्स और वॉइसलेस लेटर्स की वीडियो थी आपने देखी होगी और उससे भी आपको इन वीडियोस को समझने में मदद मिलेगी, यानी दे विल बी हेल्पफुल। आइए अब हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि खे के वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस होते हैं। अब शुरू में हमने खे को स्टार्ट में दिया हुआ है, चाहे खे का लेटर स्टार्ट में आए, मिडल में आए या एंड में आए, द साउंड विल रिमेन सेम। लेकिन फिर मैं दोबारा ये बात रिपीट करता चलूँ कि प्रैक्टिस करते वक्त एग्जेजरेशन से काम लें, मुबालगा आमेज़ी से काम लें और ऊंची आवाज़ से खुलकर पढ़ें, यानी हेजिटेशन की बात नहीं है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो योर प्रोनाउंसिएशन विल इम्प्रूव, ये तलफ़्फ़ुज़ आपका अच्छा हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। कैटल, कैटल, किक, kick, king, king, keen, keen, kiosk, kiosk, kite, kite। अब इन वर्ड्स में स्टार्ट में सी आ गया है और अगर सी के फ़ौरन बाद ए आ जाए तो ये काफ की आवाज़ देता है, यानी खे की आवाज़ देगा, जस्ट लाइक cat, cat, call, call, cake, cake, cart, cart, cage, cage, care, care। देखिए अगर ये अभी जो हमने लफ्ज़ की प्रैक्टिस की है, अगर इसको हम केक बोलेंगे तो इट विल बिकम उर्दू वर्ड, ये उर्दू का लफ्ज़ बन जाएगा केक। उर्दू में केक केक ही होता है, लेकिन इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे केक, केक। केबल, केबल, क्यूट, क्यूट, क्यूरियस, क्यूरियस, creepy, creepy, crispy, crispy, clever, clever, carpenter, carpenter, croft, croft, cunning, cunning, cabinet, cabinet, caterpillar, caterpillar, cook, blockage, blockage, locksmith, locksmith, sickle, sickle, shock, shock, mock, mock, cock, cock। इन अल्फाज में अगरचे सी के 2 लेटर्स यूज़ हुए हैं, इकट्ठे यूज़ हुए हैं, बट द साउंड इज़ ओनली वन, एक ही आवाज़ आएगी, जस्ट लाइक खा, खॉक या मॉक। अभी हम इसकी कुछ और एग्जांपल देखते हैं। टेक,
अब देखिए यहाँ पर खे साउंड मिडल में आ रही है, टेक, लोकल, लोकल, एंकल, ankle, uncle, uncle, wrinkle, wrinkle, tickle, tickle. अच्छा, इन वर्ड्स के अंदर भी आपने देखा कि wrinkle W R से पहले साइलेंट है और W बोलने में नहीं आएगा, W लिखेंगे, साउंड विल रिमेन सेम, wrinkle यानी W बोलने में नहीं आएगा. इन वर्ड्स के अंदर हमने C और K यानी मिक्स शामिल किए हुए हैं और द साउंड रिमेन्स सेम. आइए अभी हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं. बकहोल, बकहोल, बार्क, बार्क, बुक, बुक, पिक, पिक, lock, lock, clock, clock, rock, rock, stack, stack, quick, quick, tuck, tuck, sack, sack, flick, फ्लिक. अब हम चलेंगे टंग ट्विस्टर्स की तरफ. ये जो टंग ट्विस्टर्स हैं आपकी लैंग्वेज को खूबसूरत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. यानी आपने एक सेंटेंस को या एक टंग ट्विस्टर को एक ही सांस में बोलने की कोशिश करनी है. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट विल बी. लेट्स सी द फर्स्ट टंग ट्विस्टर. काइंड किंग्स कीप केयरफुल काउंट ऑफ केक क्रम्स. काइंड किंग्स कीप केयरफुल काउंट ऑफ केक क्रम्स. Kate kicked the key off the kitchen counter. Kate kicked the key off the kitchen counter. Kate keeps kites in her closet. Kate keeps kites in her closet. The king kept the keys in the kettle. The king kept the keys in the kettle. Kevin's cupcake is cute. Kevin's cupcake is cute. To cut your coat according to your cloth. To cut your coat according to your cloth. Can you quickly kick a crooked Coca-Cola can? Can you quickly kick a crooked Coca-Cola can? आइए अब हम देखते हैं खे की कन्वर्सेशन. यानी कन्वर्सेशन है जिसमें खे की साउंड के अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं. Call in. Okay, Mike. At 6 o'clock, you take a taxi to the bank. Max will come out with the cash in a cream-colored case. Call in. Okay, Mike. At 6 o'clock, you take a taxi to the bank. Max will come out with the cash in a cream-colored case. Mike, I'm to collect the cash. Mike, I am to collect the cash. Colin, of course. Don't ask questions. Just concentrate. Colin, of course. Don't ask questions. Just concentrate. Mike, Colin, if they catch me, I'll confess. Mike, Colin, if they catch me, I'll confess. Colin, keep quiet, can't you? At 5:45, Coco will be parked at the corner of the market square. Colin, keep quiet, can't you? At 5:45, Coco will be parked at the corner of the market square. Mike, I'll scream. I'm a coward. Mike, I'll scream. I'm a coward. I think that you must have learned the sound of K properly. प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार सुनेंगे, आपको इसकी अच्छी समझ भी आ जाएगी और प्रैक्टिस भी आ जाएगी. बस ज़हन में रखना है कि जब खे की आवाज़ को स्टार्ट करना है तो अपनी ज़ुबान का पिछला हिस्सा ऊपर तालू के साथ लगाएं ताकि हवा का दबाव रुक जाए. और जिस तरह फी और ठी की साउंड्स हम निकालते हैं इसी तरह हम खे की साउंड जो है मुंह से निकालेंगे. और इसमें ये भी एक वॉइसलेस लेटर है, यानी खे इज़ अ वॉइसलेस लेटर. सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे. इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. विश यू बेस्ट ऑफ लक. गुड बाय फॉर नाउ.